आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। कभी आपने सोचा है एक ऐसी दुनिया में उतरना जहां अंधेरा है और उस अंधेरे में छुपी हुई है कई भयंकर घटनाएं? क्या आपको पता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के बिना हमारी आंखें अंधी हो सकती हैं और हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है? तो चलिए जानते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट का यूज करके इमेज को एनहेंस करता है, लाइट को एनालाइज करता है या अन्य फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास। इनका यूज साइंटिफिक रिसर्च, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और इंडस्ट्री में होता है। ये डिवाइस हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। ये हमें छोटे और दूर के ऑब्जेक्ट देखने में और लाइट को एनालाइज करने में मदद करता है। और इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस में इंजीनियर ई के पद पर कार्यरत कृष्णा रेड्डी। सबसे पहले जानेंगे इंजीनियर ई कृष्णा रेड्डी के बारे में। Myself, Krishna Reddy, working as Optics Engineer E in Aries, Nainital. I completed MSc Tech Engineering Physics with specialization Photonics from NIT Warangal. अब जानेंगे सर की एरिया ऑफ रिसर्च के बारे में। My current research area is optical instrumentation, which includes optical design, analysis of astronomical instruments, and coating related aspects like mirror coatings of the primary mirrors of the 3.6 Devastal optical telescope and the 1 meter primary mirrors, and the alignment of the telescope and other maintenance activities. Yeah, optics is a very much useful in day to day. If you see, for example, cameras. For common man, everybody knows the cameras. Okay. उसमें आपने देखा होगा लेंसेस एंड द सेंसर। ओके, हमारा बेसिकली काम है उसको डिजाइन करके गिव द गुड इमेज और द सेंसर, दैट्स इट। इट सेम अप्लीकेबल टू टेलीस्कोप्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो। सो डिजाइन, फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन and take the manufacture the optical components and align it and make a complete instrument, give it to the either astronomers if it is astronomical instrumentation or medical optics. Different, several areas optics field is there. So basically this is the thing. So in simple terms, if astronomers requirement, if they tell the requirement, I need a this instrument, so my work is design to meet the requirements, specifications, and the development means after design we have to make or procure the two instruments and align all these optical components and test those things, and finally integrate with the telescopes and take the data, commission the entire instrument. After that we also do the coatings for the primary mirrors of the 3.6 meter telescope and other 1 meter telescope also. That is basically aluminum coating. And another thing is, because there are different facilities are there, we have to maintain, because lot of equipment integrated to the each and every facility. So those instruments and those facilities we have to maintain time to time. Telescope is nothing but, you know, your eye, right? What your eye is doing, it is seeing the infinite object, and that object is imaging on your retina, right?
So that light passing through a lens that is inside your retina, it is focusing on the retina, right? That is focus point. Telescope is the similar way. Our eye lens is nothing but the mirror. So it collects the light from the infinity and focus on the sensor. Here our sensor is several instruments as per the requirement of the astronomical user. That could be spectrometers or polarimeters or photometers, depending on their research area. Ultimately, telescope collects the light and focus it on the sensor. Or if you want to see visually, we can replace with the sensor with a simple eyepiece, and you can visually see with our eye only. For example, in optics field in research, like I said, for example, if you take the spec or intraocular lenses, so it is useful to common people. If you take the optical fiber, so useful, majorly useful in the communication systems. Take the defense systems like thermal cameras. So with that, people are means optics field is using vastly. So it is useful to common man also, day-to-day life. For example, if you take the automobiles, the mirrors, so everything is optics. So it is very much useful in day-to-day life also. सर की रिसर्च कॉमन मैन और स्टेम के लिए कैसे यूजफुल है, आइए जानते हैं. So earlier I have worked in several Indian institutes like SAC ISRO as a research fellow and Tata Institute of Fundamental Research as a scientific officer. There I have worked in the optical design and the payload testing. So those kind of areas I have worked. In earlier days I have also worked in private companies. There I developed analytical instruments like spectrophotometers, turbidity meters. Like spectrophotometers is mostly used in the pathological instruments, pathological laboratories. Chemical testing like water testing, like turbidity meters, they use for the water testing. So earlier I have worked in those areas. So after coming to the areas, majorly I worked in the optical instrumentation of the astronomical field, because this is the astronomy institute. So my basic responsibility is to give the best, better and sharper image to the astronomers to get the more and more details from the astronomical objects. So here my major work is on the optical design and development of the optical instrumentation for the astronomical research. Future also in astronomical research is continuously growing, because it needs more major instruments, like they need good spectrographs to get the as much as information from the stars. So accordingly, we work on the instruments. So currently, I am working in a optical and infrared spectrograph. So it covers the optical range, near infrared range. So depending on the astronomer's requirement, we work accordingly. अब जानेंगे सर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रिसर्च के बारे में. Yeah, India in optics are, if you take the photonics, is a very much growing field in India. We are doing a very good work. Like you say, if you see, your major part of work is going in lot of IITs, NITs, ARIES, IAA, IASEs. So major part of work is going on, but still we have to grow, like in countries like USA and other European countries and some Asian countries. So they are doing some good advanced work, but still we are doing very well in this field. सर की ये रिसर्च ग्लोबली कहाँ स्टैंड करती है, आइए जानते हैं. Yeah, like I said, USA, some countries in Europe and some Asian countries like Russia, Japan. So they are also doing very good work in this field. इंडिया के कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं इस रिसर्च में और इंडियन इंडस्ट्री इस रिसर्च से कैसे एसोसिएटेड है, आइए जानते हैं. For example, for our instruments, it needs, for example, if we take a camera, it has a lot of components like optical components, lenses, and other optical components. So mostly whenever we develop a design and develop a instrument, we take most of the components from the industry only. So in that way, it is growing very well. In currently, private industries, optical industries are working in defense field very well. Still, there is a lot of scope is there, because especially if you want to build a, for example, 3.6 meter or more than 1 meter for such a big mirrors, still some major setups are required. So for that major optical components, we are still depending on the other outside countries. But definitely, like government initiative like Make in India and other grants, so definitely we will definitely grow at par with respect to the developed countries. अंत में कृष्णा रेड्डी ने क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं. या टेलीस्कोप्स अलग अलग तरीका का होता है. कुछ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स होता है. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बट उसमें जो जिसमें मिरर्स यूज होता है, जैसा न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, आरसी टेलीस्कोप है, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. रिफ्लेक्टिंग मिरर से यूज होगा. अगर आपने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आप बात किया, तो आप सिंपली अपने कैमरा, डीएसएल कैमरा, दैट इज ऑल्सो एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. सो उसमें मिरर्स इन्वॉल्व नहीं होगा, खाली लेंसेस इन्वॉल्व होगा. उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग. इसको डायोप्ट्रिक एंड कैटाडायोप्ट्रिक टेक्निकल टर्म्स में हम डायोप्ट्रिक और कैटाडायोप्ट्रिक भी कहते हैं.
अंत में कृष्णा रेड्डी ने क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं। हमारा जिम्मेदारी है, ये डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज हम भी इधर बहुत स्टूडेंट्स आते रहते हैं पब्लिक आउटरीच के लिए। हमने ऑप्टिक्स फील्ड में भी हमारे पास कंपोनेंट्स है, हमको विजुअली दिखाता है व्हाट इज़ द डिस्पर्शन, व्हाट इज़ द डाइफ्रैक्शन, व्हाट इज़ द लेंस, हाउ इट इज़ इमेजिंग फॉर्मिंग। सो लोगों को और स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को एजुकेट करना और आगे लेके जाना। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने सुना हमारा ये खास कार्यक्रम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पे। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहद पसंद आया होगा और अभी के लिए दीजिए हमें अनुमति, फिर मिलते हैं। नमस्कार।